Good morning, students. So, dear students, we have started our chapter, that is metals and non-metals. So, in our previous lecture, we have discussed about some physical properties of the metals, in which we discussed about some properties, that is physical state of metals and non-metals, luster of metals and non-metals, malleability of metals and non-metals. So, for today, we are going to discuss about some remaining properties, in fact some physical properties of metals and non-metals. So here is a fourth property, that is ductility. So what is ductility? It's the capacity of metals to be drawn into wires. सो डक्टिलिटी जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जहाँ पे मेटल्स को जो है वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको इलेक्ट्रिक वायर्स में ड्रॉ किया जाता है. अगर हम अपने घरों की बात करें तो आपने जो है अपने घरों में भी देखा होगा, कॉपर की वायर्स हमारे हीटर्स वगैरह में होती हैं, या एल्युमिनियम की वायर्स हम अपने हीटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं जिन पे हम खाना कुक करते हैं. ठीक है. और सिल्वर की भी वायर्स होती है, बिकॉज सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली, so everyone can't afford these wires, so in order to that we can't use silver wires, but being a metal, silver is also drawn into wires. क्योंकि सिल्वर जो है ये कॉस्टली है, महंगा है, और इसकी वायर्स हम अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये एक मेटल है, तो मेटल होने के कारण इसको भी वायर्स में ड्रॉ किया जाता है. ठीक है. और कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, दैट इज एल्युमिनियम एंड कॉपर. क्लियर. And in non-metals are non-ductile because they are not drawn into wires. non-metals जो है इन्हें वायर्स में ड्रॉ नहीं किया जाता है, इसलिए non-metals जो है ये non-ductile है. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज metals are good conductors of heat. metals जो है ये good conductors of heat, that means ये जो है हीट को मूव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं from one end to another end. for example copper, gold, aluminium. ठीक है. एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड. ठीक है. नॉन मेटल्स जो है ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं. आप प्लास्टिक की एग्जाम्पल ले सकते हैं, वुड की एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है. सो हियर कम्स द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट इज कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम. So generally all metals are best conductors of electricity, but there are some exceptions that some metals do not conduct electricity, and the metals which are best conductors of electricity are silver, copper, aluminium. And in non-metals are bad conductors of electricity, that means they don't conduct electricity. But here there is an exception, that is graphite is a good conductor of electricity. That's why graphite is used in electrodes. graphite जो है being a non-metal, इसे हम as a good conductor of electricity यूज करते हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है. दैट्स वाई रेयरली जो कॉमनली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे बैड कंडक्टर्स होते हैं, और ग्रेफाइट जो है ये एक एक्सेप्शन है. ठीक है. नंबर सेवन्थ प्रॉपर्टी इज सोनोरस. सोनोरस मीन्स इट्स द कैपेसिटी ऑफ ए मेटल टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. सोनोरस जो है ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें मेटल जो है एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा हमारे हेडमास्टर ऑफिस में जो है रिंगिंग बेल जो होती है, जैसे हम उसको थोड़ा प्रेस करते हैं, थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक है. या मंदिर में आपने घंटी देखी होगी तो वो भी साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक है. एंड ऑल द मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स जो होते हैं लगभग सारे सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स दे आर नॉट सोनोरस, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द एट्थ प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है. दैट्स वाई वी यूज मेटल्स, वी पुट ऑन मेटल्स ऑन द गैस स्टोव, ऑन द हीटर टू कुक अवर फूड.
जिसके कारण सो दैट दे कांट मेल्ट, वो मेल्ट नहीं होते हैं, वो ब्रोक नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण हम जो है आराम से अपना खाना जो है अपने मेटल कंटेनर्स में खाना पका सकते हैं. एंड नॉन मेटल्स हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल वी कांट यूज प्लास्टिक ऑन द गैस स्टोव, दे गेट मेल्ट easily, or wood we can't use because they get burned easily. That's why non-metals have low melting point. Then ninth property is the density. Density means mass per unit volume, and in easier term we can say mass per unit volume means atoms in metals become closely packed or tightly packed. Atoms जो होते हैं मेटल के वो closely packed होते हैं, नज़दीक होते हैं, tightly bounded होते हैं, ठीक है. So in metals density is high, and if we talk about the non-metals density is low, but again exception is here. Carbon is a non-metal, but being an exception, carbon is having a high density. Number 10th property is hardness. So in metals, some hard metals, for example copper, iron, magnesium, they are so hard in nature which can't be cut into pieces by a knife. But again there is an exception, that is sodium and potassium are also metals, but they are very soft, so they can be easily cut into pieces by using a knife. And if you talk about the non-metals are very soft and brittle, they can be broken down into pieces very easily, but again exception is here. Diamond is also a non-metal, but being a non-metal it's very hard in nature because it's a one form of carbon. So dear students, this is all about the physical properties of the metals and non-metals. And in my previous topic I told you that elements are divided into three parts, that is metals, non-metals and metalloids. So we have discussed metal and non-metals, and our next topic is metalloids. So metalloids are something which shows the property of metals as well as non-metals. So metalloids जो हैं इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी. फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. So dear students, here I conclude my today's topic. Take care and thank you.